नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और जो आज का सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा क्योंकि ये रिक्वेस्ट कई बार आती रही। और जब हमें तो ये नाम रिकमेंड हुआ कि मनोज कुमार आनंद से ये सेशन कराएं, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंसॉल्वेंसी के ऊपर प्रोफेशनलिज्म में उनका बहुत नाम है। एंड इनके हमने कई बार देखा, जब नाम रिकमेंड हुआ कि कई सेशंस इन्होंने लिए, और जब उन्होंने देखा कि जितनी स्पष्टता से ये सेशंस को समझाते हैं तो उसमें लोगों का रुझान ही अलग होता है। इन्हें हमने रिक्वेस्ट करी कि ये सेशन एक हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो जिससे लोगों को अच्छा रहे। वेलकम फ्रेंड्स, इट्स अ प्लेजर दैट amongst us we have MK Anand and Associates, a chartered accountant, those who have created their niche within this market. And friends, to understand the basic changes and nuances of this session regarding the individual insolvencies, the basic concepts, procedures, and latest developments in IBC 2018 is a journey to be well understood by a person who can actually explain the things and hammer the points in the right way and the right perspective. There couldn't be a better way to start what you say, as they say that the news time is, or the prime time for the news is 9 p.m. So we thought, why not enrich ourselves with a person who has a knowledge in a different way, but who can explain and express the words in a most subtle and simple manner. His points, as they say, when you strike with the hammer, hit on the head of the nail and it gives the best products. So with his screen sharing process, we can well understand that things would be made understandable in a simple and a lucid manner. Since we understand that it's 9 p.m., we will straight away start with the session, and we will request Mr. Anand to take the baton forward, and we will allow him screen sharing. Over to you, Mr. Anand. You will have to unmute yourself. Thank you very much. Thank you very much, Vikas ji. For giving me an opportunity to share my, little bit of knowledge with you. And in fact, I also belong to the Punjab. Lekin for the last, in fact, since my childhood, my father was having a rice mill in the Punjab. But when I was in 8th, I shifted to Delhi after his death. And since then, for the last 45 years, I'm in Delhi. And by profession, as you already introduced, that I'm a chartered accountant. Mainly, I was a chartered accountant, but this IBC law came in 2016. At that time, they allowed us to pass an exam. I passed it in May 2017, and after that, I'm in the IBC practice since last 4.5 years. Let me start my presentation, which I specifically prepared for this thing. Mr. Anand, probably you will have to come closer to the speaker, or you will have to make the speaker's pitch slightly higher. Is it not clear? No, I have received the message. I also felt that there was some issue. You can make it slightly closer to the mic or make the volume higher. Okay. Yeah. It's my now 100% volume. Yeah. Just unmute yourself. Unmute. Yeah. Okay. I think my voice will be clear now. Absolutely clear, or still some doubt is there? Okay. Thank you very much, Vikas ji, and for giving me this opportunity to share it with everybody in the Punjab and Chandigarh also, and most probably all of the North India also. And in fact, I also received requests from, when I said by this message, that I also received requests from my prospective listeners that if preferably if I can speak in English, then it will be better. But I replied to them that staying in the northern India and especially in Delhi, you have to use mixed language, Hindi and English both. But I should try to be, more prolific in English and less in Hindi, so that you can also understand to me.
In any case, I'm starting this thing. The topic for today is individual insolvency, basic concepts, procedures, and latest development under IBC 2016. Today is 14th of July 2022. I'm thankful to Beyond Law CLC who has given me this opportunity through Mr. Vikas of presenting my this slides. This is a little bit of what my little bit of profile is, because okay, now let me come to the start my topic immediately. Let's understand what has been the history of our insolvency laws in India. I have divided this in two parts. One is that earlier and present law. Since my all listeners and my all attendee are learned and highly placed advocates, I have prepared my PPT keeping their profile in mind, and I hope I'll be able to satisfy to them, and I'll be able to get some knowledge from them also, because in every presentation I feel that not only I share my knowledge, but by replying to questions or by answering, I also learn a lot, and especially the kind of gathering which we have right now. All the senior speakers are there. 2 or 3 persons from my side is also there. Mr. Mukesh Jain, good evening. Kaise hain aap? And Mr. Anupam Lahiri, I just shared with you. He is a very high-ranked officer from NCLT Principal Bench, and Mr. Mukesh Jain is my colleague. Okay. What is the history of individual insolvency? If we see it, it's a insolvency is a natural process in any business. It is happening since business is going on. What used to happen was that the history of, it was earlier in normal words, it was called Diwaliya. History of Diwaliya word in India. In ancient India, if a person is not able to pay his debts, then during daytime, he will need diya in his shop. And then the whole market knows that he has become Diwaliya. Meaning thereby कि he is not able to pay his debts, तो he become दिवालिया. तो फिर सारी मार्केट को जब ये बात पता चल जाती थी, तो this was the insolvency started since ancient times. But this process was having no legal sanctity. With the passage of time, when government thought of legalizing this particular process, then they promulgated 2 laws. One was Presidency Insolvency Act 1909. Another was Provincial Insolvency Act 1920. What basically difference is in these 2 laws? Just to understand the insolvency law. Presidency Insolvency Act was applicable only in 3 big cities: Calcutta, Mumbai, and Chennai only. Or Provincial Insolvency Act 1920, it was applicable rest of the whole India, including our northern parts of India, Delhi, Chandigarh, whole Punjab, whole Haryana, and everywhere. I mean to say this thing that presidency insolvency was applicable, was confined to only 3 cities: Calcutta, Mumbai, Madras, and Provincial Insolvency Act was applicable to the rest of the India. और इसमें एक बड़ी मजेदार बात थी, which when I was doing my R&D, तो I come across. I thought of कि ये 1909 और 1920 के एक्ट हैं. Let me see whether there are any cases been done there under these acts or not. So when I did little bit of research, I came across that only at present 500 cases are being done. और इनका जो average rate है adjudicate करने का, it is 30 years, 40 years, 25 years, it's like that. और ये जो 500 केस हुए हैं, ये सारे के सारे केसेस जो हैं सिर्फ 2 ही जगह से हुए. बेसिकली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, गुजरात एंड मुंबई, और सम केसेस होता है कलकत्ता में. देयर वाज नॉट ए सिंगल केस इन फ्रॉम होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया टू व्हिच वी बिलोंग. बट इसके अपोजिट एक और बड़ी मजे की बात है, जैसे हम अभी थोड़ी टाइम बाद पढ़ेंगे हम, कि इसी का पैरेलल आईबीसी के अंदर एक सेक्शन 95 की एप्लीकेशन आती है. जब सेक्शन 95 की एप्लीकेशन, जब आईबीसी आया, सेक्शन 95 की एप्लीकेशन आई, बिकॉज ऑफ whatever the reasons there, maximum application has come from the Delhi side. तो मीनिंग देयर बाय कि जैसे ही एक नियाल आया, कुछ चेंज हुआ लॉ के अंदर, तो एकदम नॉर्दर्न पीपल भी वेरी एक्टिव हो. और
जैसे मैंने अभी आपसे शेयर करा कि प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट था, सिमिलरली एक मॉडर्न लॉ था रिकवरी के लिए, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, व्हिच इज ब्रीफली नोन एज आरडीडी बीएफआई। इस क्या कहते हैं एक्ट के अंदर जो था अप्रोक्सीमेट इसकी लिमिट है 10 लाख, और इसका जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है दैट इज डीआरटी। मोस्ट ऑफ माय लर्नड फ्रेंड्स बी नोइंग इट, and they be some of them be practicing in it also. Then came SARFAESI, known as Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Limit in SARFAESI is 1 lakh. I'm not practicing SARFAESI, but a lot of my audience be practicing in SARFAESI. इसके अंदर basically यही होता है कि if anybody has given any security to a bank that he is not able to repay his debt, then bank sells off his security. It has a very big correlation with the IBC, and I'm still saying that a lot of applications by banks are being filed under SARFAESI to DRT, because this is proving out to be a quite effective act as far as recovery is concerned. Then SARFAESI को और डेट रिकवरी को दोनों को अंदर कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया व्हिच वाज नोन एज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके अंदर आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इन इट, तो इसके अंदर जो SARFAESI एक्ट के अंदर कमियां पाएगी, लाइक सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, जब और भी जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं दे बी नोइंग इट बेटर, एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट इफ एनी ऑफ द ऑडियंस कैन add to what I say, I'll be really thankful for that, because we all are on the same footing. मैं भी, अगर मैं तो सीए हूँ, आप लोग तो एडवोकेट्स हैं, you be knowing law better than me. और एक मैंने और देखा है कि ये भी एक थोड़ा सा अच्छा पॉपुलर हो रहा है रिकवरी के लिए, यानी कि since our topic is of individual recovery, MSME समाधान। MSME समाधान के अंदर भी जैसे कि आप जानते हैं कि अगर MSME को 45 डेज के अंदर पेमेंट ना करी जाए तो then they are entitled for interest and other things also. तो MSME समाधान के भी हर क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके बेंचेस हैं, पहले स्टेट वाइज इनके बेंचेस होते थे, तो एक ये भी एक रिकवरी के लिए अच्छा है। बट जितने भी मैंने एक्ट बताए इन सब की कोई ना कोई लिमिटेशन है। जैसे MSME एक्ट है, इसके अंदर आप सिर्फ MSME ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं रिकवरी के लिए। और SARFAESI एक्ट है, उसके अंदर ओनली बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन गो फॉर रिकवरी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, और that too by selling their securities। तो एक थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट के अंदर आया कि क्या नाम इसका, और इन सब एक्ट के अंदर एक कॉमन में से बड़ी कमी थी कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्रोविडेंशियल एक्ट 30 साल 35 साल 25 साल वाज द टाइम, और तब तक बंदा मर जाता था तो उससे क्या पैसे रिकवर कर भी लिया या नहीं करे तो उससे क्या फर्क पड़ता था। और SARFAESI एक्ट के अंदर भी कोई टाइम नहीं था, इट वाज नॉट ए टाइम बाउंड कि आपको इतने टाइम के अंदर करना ही करना है। और गवर्नमेंट वाज रियलाइजिंग दिस थिंग, जैसे बाइफर के अंदर भी रिकवरीज वगैरह कुछ एक हो रही थी, तो उस गवर्नमेंट ने ये रियलाइज करा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी हम किसी चीज की डिसीजन मेकिंग में टाइम लगाते हैं, बिकॉज आवर जुडिशरी इज इधर हेवीली ऑक्यूपाइड और they don't work like Western judiciary, Western countries judiciary, तो जो एसेट बेस होता है वो बहुत ज्यादा इरोड हो जाता है। जब एसेट बेस इरोड हो जाता है तो अगर कहने का मतलब ये है कि एसेट बेस इरोड होने का मतलब ये है कि जब वो केस स्टार्ट होता है तो मान के चलो उसके पास 100 करोड़ रुपए की अगर देनदारी थी उसकी, और केस खत्म होते होते वो 100 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए में रह जाता है। रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स इवेपोरेट इन द एयर, और जहाँ वो सब एसेट्स होते थे इनके पास, ऑनर्स के पास, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे वर एबल टू ईट मोस्ट ऑफ द एसेट्स देयर। तो इन सबको चीजों को देखते हुए देन गवर्नमेंट थॉट ऑफ लेट्स ब्रिंग ए एक्ट जो कि एक टाइम बाउंड हो, जो कि एक क्या नाम टाइम बाउंड हो, और जिसके अंदर रिकवरी भी फास्ट हो बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड। और सबसे बड़ी उन्होंने ये गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जो डेटर इन कंट्रोल है इसको छोड़ के, डेटर इन कंट्रोल मीन इन आईबीसी वी कॉल ऑनर्स एज अ डेटर, जो डेटर इन कंट्रोल है सबसे पहले जैसे ही उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन फाइल हो, जैसे यहाँ पे सेक्शन 7 या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल होती है, तो इमीडिएटली जो बिकॉज दे वर द मेन कल्प्रिट और मेन मैनिपुलेटर ऑफ इरोडिंग द सिक्योरिटी, तो उनसे ये निकाल के हम जो है ये जो क्या कहते हैं किसी और को इसकी मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए।
which that was the basic thought. और this system is quite prevalent in most of the countries also. और इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जो IBC लाया था मलेशिया को उन्होंने कॉपी करा था. सिंगापुर इज ऑल्सो क्वाइट प्रेवलेंट. और क्या कहते हैं यूएसए में तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे तो सिमिलर टाइप ऑफ लॉज पिछले 15-15, 20-20, 30-30 साल से चल रहे हैं. तो ये आया जी. तो इसके अंदर सिंस वी हैव टू कन्फाइन टू द इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी ओनली, तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को जो इस एक्ट के अंदर दिया गया, दैट इज इन पार्ट 3 ऑफ IBC 2016 and it was made applicable from 1st of December 2019 only, and that too for a corporate guarantor. I just remind you कि जो IBC मेन एक्ट था वो दिसंबर 2016 से एप्लीकेबल था, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए जो भी इन पार्ट आया है इट वाज मेड एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम 1 दिसंबर 2019. ओके, अगर मेरे को ये कहा जाए कि इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के अंदर एक शब्द में मैं कोई बात कहूं कि यानी कि एक लाइन के अंदर मैं पूरे एक्ट को बताऊं कि इसका क्या प्लस पॉइंट आ जाए, इसका एसेंशियल फीचर क्या है, तो मैं एक यही कहूंगा कि ये एक एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके अंदर इट डिस्चार्जेस अ पर्सन और इन इट्स ऑफ ऑल इट्स पास्ट लायबिलिटीज एंड ही कैन स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर बेयरिंग पेन फॉर अराउंड 1 year. 1 year तो नहीं है, बैंक्रप्सी के अंदर 1 year है. उससे पहले इंसॉल्वेंसी रजिस्टर प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है, उसके अंदर स्टैट्यूटरी 180 days है. तो यू कैन सी कि दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 years. तो ये इस यानी कि एक्ट की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है. जैसे कि आई जस्ट रिमाइंड यू कि जैसे हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट थे पहले वाले मिस्टर ट्रम्प, ही वाज आल्सो बैंकरप्ट. बट अमेरिका के अंदर लॉज ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा बैंकरप्ट होता है एक पर्टिकुलर स्टेज पास करने के बाद, एंड ही कैन बी अ लाइफ पर्सन, ही कैन बी अ नॉर्मल पर्सन. ऑन द सेम लाइंस दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एक्ट कि अगर इसके अंदर एक बार वो बंदा बैंकरप्ट हो जाता है तो ही कैन आफ्टर गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जो बैंकरप्सी का प्रोसेस है जो हम आगे देखेंगे, ही विल कम आउट एज अ नीट एंड क्लीन एंड ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस अगेन. चलिए जी, पहला मेरा हिंदी का वर्ड आ गया. इसका हिंदी का क्या नाम है? दिवाला एवं संशोधन अक्षमता कोड 2016. ओके, नाउ माय लर्नड एडवोकेट्स, किसी भी चीज को अगर हमने क्या कहते हैं उसका यूज करना होता है तो हम उसको अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेबिलिटी के लिए वी हैव टू नोटिफाई ए पर्टिकुलर सेक्शन. सिमिलरली जैसे कि इसके अंदर जैसे हर कोड के अंदर होता है कि सेक्शन 1 होता है, वो ये डिफाइन करता है कि ये किस एरिया में एप्लीकेबल होगा. तो सेक्शन 1 जो था इट क्लियरली सेज कि इट इज एप्लीकेबल ऑल ऑफ इंडिया. जब इनिशियली 2016 में आया था तो उस समय ये कहा गया था कि इट इज नॉट वोंट बी एप्लीकेबल इन J&K, बट लेटर ऑन इट वाज मेड एप्लीकेबल टू J&K आल्सो. इसके अंदर सेक्शन 2 था. सेक्शन 2 डिफाइन करता है कि किन क्लासेस के ऊपर ये IBC एप्लीकेबल होगा. ये मेरे जो 4 पॉइंट्स है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू कॉर्पोरेट्स. तो आज का मेरा कॉर्पोरेट्स का टॉपिक नहीं है, फिर फ्यूचर में कभी कॉर्पोरेट्स के ऊपर बात होगी तो हम करेंगे. तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर. ओके, इंडिविजुअल्स को IBC ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. पहला पार्ट है पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर्स, सेकंड पार्ट है पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म, एंड थर्ड पार्ट है इंडिविजुअल अदर देन पर्सन्स रेफर्ड टू इन क्लॉज E. मीनिंग देयर बाय कि आज की डेट में जो इन्होंने सेक्शन 2 को नोटिफाई करा था दिसंबर 2019 में, वो सिर्फ आज की डेट में पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर को ही करा है. इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जुरिडिक्शन अलग अलग है. इन द केस ऑफ पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर, जुरिडिक्शन इज विद द NCLT, and in all other cases jurisdiction is with the DRT. So since when this particular act was made applicable on the individuals, तो गवर्नमेंट थॉट ऑफ कि अगर हम एक ही बारे में इसको कर देंगे तो हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, DRT में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. हम देन दे थॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास जो है इतने ज्यादा केसेस आ जाएंगे, हम उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे. और लेट्स हैव एन एक्सपीरियंस आल्सो
कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, क्या नहीं आती, तो उसको हम कैसे करें। तो अब आज की डेट में इन्होंने जो सिर्फ पर्सनल कंट्रोल टू कॉर्पोरेट डेटर को ही क्या कहते हैं नोटिफाई करा है, मीनिंग देयर बाय कि हम इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी सिर्फ उन्हीं के केस में स्टार्ट कर सकते हैं जो किसी भी जिन्होंने किसी भी कंपनी का गारंटी दे रखी है, नॉन अदर देन दैट। लेकिन इस एक्ट के अंदर डेफिनेटली प्रिजन्स हैं एज पर क्लॉज एफ एंड जी। आई होप विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसी थॉट नहीं है इनको स्टार्ट करने की, और यानी कि अदर देन दीज आल्सो। तो इनके अंदर भी, अब इसके अंदर भी मैं बताता हूँ आपको, बैकग्राउंड ये है, सिंस वी आर हेवीली इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आल्सो, इसको इन्होंने इस करके स्टार्ट करा पर्सनल कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, स्लाइड्स मैंने बना रखी है इसके अंदर, बिकॉज दे सेड कि क्रिप के अंदर आने के बाद चलिए कंपनी को तो आपने जो भी था लेके बैंकों के पैसे दे दिए, जब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पैसे दे दिए, लेकिन इनके जो मालिक थे, जो ऑनर थे, दे वर लिविंग किंग साइज लाइफ। व्हेन दे वर लिविंग किंग साइज लाइफ, तो लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म वाज विद द गवर्नमेंट कि जब वो, उनको तो आपने कुछ कर नहीं पाए, कंपनी को आपने कर लिया, ये कर लिया, तो उस मजबूरी के अंदर फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसको जो जो बिकॉज जनरली वो जितने भी डेटर्स होते हैं, जो भी बैंक लोन वगैरह होता है, तो वो गारंटीज देते ही हैं। So then, in their vision, government thought of bringing personal control to the corporate data. ये स्पेसिफिक सेक्शन है जो 15/11/19 का एमसीए का नोटिफिकेशन आया था 1/12/2019 से, जिनको उन्होंने कहा था कि ये यानी कि इंप्लीमेंट हो गए। सेक्शन 2 ही हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सेक्शन 78-79 डील्स विद एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन दैट वी शैल रीड नाउ। 94 to 187 डील्स विद इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई थिंक 27 सेक्शंस जो बनते हैं। उसके बाद 239 ई डील्स विद द पावर एंड टू मेक रूल्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और डेलीगेटेड बाय एमसीए। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर रूल्स बनाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के थ्रू बनाती है। और सेक्शन 240 है जो डील करता है मेकिंग रेगुलेशन। इन दिस केस, इन द केस ऑफ IBC, IBBI is the designated authority to make regulations. Or just see the beauty of this act, that because of this implementation, and just see the importance of this act also. Section 249 simply change the name of a particular law, the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 to the Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993. तो ये देखिए, एक पर्टिकुलर इस एस्पेक्ट को लाने के लिए एक जो पर्टिकुलर एक्ट जो मैंने भी पहले आपको बताया था रिकवरी का, उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया एंड चेंज टू दिस थिंग। और सेक्शन 1 प्रिजर्व विद रेफरेंस वाज नॉट एप्लीकेबल दिस, यानी जब शुरू में ये एक्ट आया था 2019 में, एट दैट टाइम वी ऑल आर अवेयर कि आर्टिकल 270 नहीं था, 35A J&K का नहीं था। तो फिर जैसे ये इंप्लीमेंट हो गया, तो इस एक्ट को 18 मार्च 2020 से J&K के अंदर भी इंप्लीमेंट कर दिया है। सिंस हमारा पंजाब का बॉर्डर J&K के पास लगता है, तो अगर हमारे कुछ एडवोकेट फ्रेंड्स हैं जो J&K में प्रैक्टिस करते हैं, तो दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट अंडर दिस एक्ट नाउ। ओके, जब भी ये इस सेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये मैं आपको आने वाली कुछ स्लाइड से बताऊंगा कि इसके अंदर जो इंडिया के बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट दे हैव बीन गेट कॉट और दे हैव बीन अफेक्टेड, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है अनिल डी अंबानी का। व्हाट हैपेंड दैट अनिल डी अंबानी हैज टेकन लोन फ्रॉम द SBI, और अंबानी, अनिल जी ने लोन नहीं लिया था, इनकी कंपनी ने लोन लिया था। ही स्टूड गारंटी फॉर दैट। लेकिन जिस समय इन्होंने गारंटी दी थी, जिस समय लोन लिए गए थे, बिकॉज ये IBC के आने से पहले से लिए गए थे, दे नेवर थॉट ऑफ कि वी विल आल्सो गेट कॉट इन द वेब, बिकॉज जो बाकी एग्जिस्टिंग लॉस थे उनके अंदर जैसे मैंने बताया था टाइम लग जाता था करने के लिए। तो इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन थी, 1200 करोड़ रुपए का रिलायंस कम्युनिकेशन ने लोन लिया था, और he stood counter for that। और जैसे ही ये 1 दिसंबर 2019 को एक्ट हुआ, he was the first person to oppose
this particular implementation of this particular section. And Mr. Harish Salve, renowned advocate, he stood in the Supreme Court. अब ललित कुमार जैन के केस में इनका भी केस टैग हुआ था, और justified it with the government that this particular provision should not be made applicable because of the very reason जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा. In fact, if I see believe the ET newspaper notes also, it was being told that Tina Bani sold her jewelry to fight for this case. And whether he will win this case or not, he's, I must share with you, one of my friend is RP in his case, and he's under insolvency. His repayment plan, which we shall learn later on what that is, it has already been submitted to the court, I think a year ago, and it is in the process of decision making. How much time court will take, that will tell the time only. अभी मैंने आपको एक नाम बताया, हमारे यहाँ पे ये हुआ था कि जब शुरू में ये IBC आया था कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो यहाँ पे सबसे बड़े RBI ने 12 केसेस ढूंढे थे. ये सारे के सारे 12 केसेस जो थे, इनके देयर इन डिफॉल्ट वाज एक्सीडिंग 20,000 रुपीस. इट वाज वेरिंग फ्रॉम 20,000 to the 40,000 rupees, and the directors, which in the usual course banks do take guarantees from them, they never thought of that they will ever be get caught in the particular web, because they thought of that it was normally thought of that let's make a company and the company will be only responsible for that. But with the implementation of this particular individual insolvency under IBC as on 1st December 2019, I would like to just share with you some of the big stalwarts who get involved there. Everybody knows, there's no need to say his name. Mr. Vijay Mallya, along with Nirav Modi, their default amount is for Vijay Mallya Kingfisher 9,000, and for Nirav Modi it's a 10,000. This is Bhushan Steel, Neeraj Singhal, Hisar Steel, Prashant Riya, JP is Manoj Kaur, and MTech Auto, and all these people are under stress now because इनकी कंपनी से बेसिकली क्रिप के अंदर ये हुआ था कि अगर इनका 30,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट था और उसके अगेंस्ट कंपनी से 10,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट मिला या 15,000 का मिला, तो बैलेंस के लिए SBI और मोस्ट ऑफ देयर लेंडर्स वर SBI, PNB, and thereafter their insolvency proceedings has been started against them, and time will tell how much it has been a success or not. Okay, now let's come to this was the first preamble to me. Now let's come to technicality. In this act, we have two types of application. One is Section 94 application. अब Section 94 की जो application होती है, अब हम इस यानी कि individuals को दो parts में divide करें. एक हम कहें जो लेनदार है creditor, और एक जो है वो other person is देनदार, that is debtor. In this case also, you can file an application under two sections. One is called Section 94, and under Section 94, whatever maximum application which I have practically seen is being filed in those cases practically. Because why I'm sharing this thing with my fellow advocates is for the reason so that they can also plan the affairs of their clients if they are in any of these webs. Whereby what happened is that in the case of Sarfasi, bank has taken their property and they have put the notice there in for the sale of that property. In that case, if you file application on behalf of the debtor, यानी कि देनदार के behalf पे अगर आप application file कर देते हो, तो इसकी जैसे the moment you file the application, the beauty of this application is that all court proceedings against you get stopped. Meaning thereby that if the bank wants to sell the acquired property from you, he cannot sell. Second is I've seen it that there are two situations that many a times, some people do indulge in some GST sort of things, some income tax sort of things, whereby they indulge in some sort of illegal transactions, or knowingly or unknowingly, as a result of which very huge liabilities come on their head. And they feel that with this huge liability is coming out on their head under Section 179, even in the case of corporates also, debtors can be made liable under Section 179. Similar provisions are there in the DVAT Act also and this GST Act also. So if they feel that they can't get you get benefit and they will be absolutely ruined, then they can come under this act and file an application under Section 94. I have been able to get practically
lot of benefit for many such individuals. As we know, due to pandemic, there was a big corona, and because of this thing, some airlines become bankrupt. Similarly, directors for them, they are also become, because of the huge amount of plenty, also become. I won't name the airline, but everybody knows that thing. And some hotel industry people are also very badly affected because their business nature was like that, that they were dependent on the public, and the movement of the transportation and transporters were get very badly affected because of this thing, because of this epidemic in the corona period. So for that person, if they want to get rid of their financial liabilities, they can file application under Section 94 there. And another situation I've seen is that when anybody realizes that bank is going to file an application against him, he prefers that let him file an application himself, because it has a very positive effect. The biggest positive effect with this is that if bank files, then bank will propose the name of an RP. But if he files, then he will propose the name of an RP. And definitely, when you have your advocate or RP therein, you definitely have an edge in the proceedings. Banks are filing application, for two reasons. One reason is that in the CRIP, they're already, if they file the CRIP application, they file simultaneously the application get the debtors also, so that they put pressure on the debtor, and it really helps them in recovery of the amount. I've seen it practically that when any debtor realizes that his property or his house in which he is living, he has to vacate, or it will be taken by the bank. He try to go for the OTS with the bank under pressure. And second thing was that the central government has instructed to the banks that in all the CRIP cases, wherever they have a personal contest, they should file this thing application against them. Okay, since most of the audience are advocates, I'm starting my technical presentation with the landmark judgments, because we, as we know, that law written, when it comes for the implementation stage is decided by the courts only कि इस लॉ के ये प्रोविजन इंप्लीमेंट करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे. तो उसके लिए क्या नाम इसका कोर्ट डिसाइड करती है. तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो हायरार्की है काम करने की, वो सबसे पहले एनसीएलटी है. एनसीएलटी के बाद नाम आता है क्या नाम इसका एनक्लैट का. तो इस करके एनक्लैट के बाद सीधी इनकी जो जाती है एप्लीकेशन जाती है, वो सीधी जाती है सिर्फ क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर. तो अल्टीमेटली जितने भी केसेस डिसाइड होते हैं इसके अंदर, वो जो रिलेवेंट कोर्ट यानी कि टेक्निकल इश्यूज डिसाइड होते हैं, तो वो जजमेंट्स के अंदर ही होते हैं. और वो जजमेंट जो है ये लैंडमार्क जजमेंट बन जाती है. तो मैंने इस तरह से 3 या 4 लैंडमार्क जजमेंट्स आपके लिए नोट करी हैं. फर्स्ट जजमेंट इज IBBI वर्सेस ललित कुमार जैन एंड अदर्स. इसके अंदर ये मेनली मैंने जैसा आपको बताया अनिल अंबानी जी की तरफ से, या बाकी और भी अटैच पिटीशन थी उनकी तरफ से, ये जो नोटिफिकेशन इशू करा गया था इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये चैलेंज करा गया था ऑन दी ग्राउंड कि इट डिस्क्रिमिनेट्स. इट सेज, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 2E के अंदर पहले बताया था कि इंडिविजुअल्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था. जब इंडिविजुअल्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, उन्होंने कहा कि एक जो पर्टिकुलर क्लास है जिसके लिए आप नोटिफिकेशन ला रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट अदर क्लासेस. Hence, this notification is not sustainable in law and it should be scrapped. और दूसरा ये कहा गया था कि जो इसके अंदर प्रिंसिपल बोरोअर है, जब यानी कि क्या कहते हैं कंपनी है, जब उसको एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कर दिया गया और निकाल दिया गया, तो फिर लाइबिलिटी इसके ऊपर क्यों आए जो उनके ग्रंटर्स हैं. लाइबिलिटी ऑफ द ग्रंटर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल बोरोअर. और जब प्रिंसिपल बोरोअर को हमने एक रजिस्ट्रेशन प्लान के थ्रू या लिक्विडेशन के थ्रू बाहर कर दिया, तो देन व्हाई एनी लाइबिलिटी बी फास्टर ऑन दिस फेलो.
अल्टीमेटली ये हुआ कि कोर्ट ने ये सारी की सारी पिटीशन डिसमिस कर दी और ये कहा जी कि सरकार ये एक्ट लेके आई है इन देयर विजडम, इस तरह को पार्टली लाने के लिए कोई गलती नहीं है। ये जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि पर्पस यही था, सो दैट द गवर्नमेंट कैन सी टू इट कि हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इसके साथ जो थी हर इनिशियली जब ये फर्स्ट केस पास हुआ, ये ललित कुमार जैन जी का हुआ था, इंटेक्ट कैपिटल के ये क्लाइंट थे, उन्होंने ये करा था। तो इसके साथ बाद जितने भी केसेस हुए थे जहां पे भी हुए थे, इनफैक्ट होता ये था कि आई टेल यू द प्रोसीजर, टेक्निकली प्रोसीजर, ये आईबीबीआई का नोटिफिकेशन था। जब आईबीबीआई का नोटिफिकेशन था तो जो भी जिन भी ग्रांटर्स के अगेंस्ट ये क्या कहते हैं सेक्शन 95 की एप्लीकेशन बैंक्स ने फाइल कर थी, वो सारे के सारे हाई कोर्ट में चले जाते थे। जब हाई कोर्ट में चले जाता था, हाई कोर्ट इजीली इनको स्टे दे देता था। रीजन फॉर दैट इज स्टार्टिंग में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में स्टे दे दिया, ये अनिल मानी जी के केस में, तो हाई कोर्ट सारे के सारे हाई कोर्ट ने उनको फॉलो अप करके स्टे देना शुरू कर दिया। बट गवर्नमेंट वाज रियली वरिड कि अगर इस तरह से इनको स्टे मिल गया तो ये एक्ट का रहेगा क्या, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने एक कंबाइंड एप्लीकेशन सब हाई कोर्ट्स के 19 हाई कोर्ट्स के अंदर पिटीशन थी, उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में करा गया और उसमें फिर ये जजमेंट दी गई। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत अच्छी जजमेंट थी, इट्स अ वेरी डिटेल्ड जजमेंट, वी स्टूडेंट ऑफ लॉ मस्ट रीड इट। ये 82 पेज की जजमेंट थी, लेकिन इवन देन इसके अंदर थोड़ी सी कमियां रह गई जो कि शायद आने वाले टाइम के अंदर एडजुडिकेट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस जजमेंट के अंदर ये तो क्लियर हो गया कि नोटिफिकेशन प्रॉपर और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग पर्सनल कंट्रोल के लिए स्टार्ट कर जा सके, लेकिन ये नहीं क्लियर हो पाया कि अगर क्या कहते हैं अगर एक पर्सनल कंट्रोल ने दो कॉर्पोरेट डेटर्स को दे रखे तो उन डेट सिचुएशन में क्या होगा। और दूसरा, अभी हम आगे थोड़ा सा समझेंगे कि इसके अंदर जुरिडिक्शन का बहुत बड़ी इशू है कि जुरिडिक्शन डीआरटी के पास होगी या एनसीएलटी के पास होगी। तो जब डीआरटी के पास जुरिडिक्शन है तो इट शुड हैव बीन इन दैट पर्टिकुलर, इसके जो प्रोविजन थे उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आते हैं ना, जो भी जो सरफासी या उधर डेट रिकवरी एक्ट है, इसको आईबीसी अंदर क्यों लाया गया। और तीसरी इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह था जो मैंने आपको पहले कहा था कि इफ सम अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, देन व्हाई दिस पर्टिकुलर अमाउंट बी बैलेंस अमाउंट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। और दूसरा, राइट ऑफ सब्रोगेशन कि if suppose some director pays the amount, will he have a right from the new resident applicant to recover his given amount. But इस particular judgment के बाद आने के बाद all the cases are opened and this thing things started moving against them. मैं भी जैसे काफी जगह पे पर्सनल कंटेस्ट के केस में आरपी अपॉइंटेड हूँ, 5 जगह पे मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह सारी फाइनल सबमिट कर दी है। इनफैक्ट कल ही उनकी डेट है, तो थिंग्स विल बी मूविंग इन ए डिफरेंट वे। चलिए, ये बात तो हो गई इम्प्लीमेंटेशन की। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा सिंस वी आर एडवोकेट्स, वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको तरीका बताता हूँ कि अगर इस मोमेंट पे भी अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन आपके किसी क्लाइंट के अगेंस्ट है तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कैसे रिप्राइव ले सकते हो एज पर लॉ। वो मेरा सेकंड है लैंडमार्क जजमेंट है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो है गुरमीत सोधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये एक बड़ी लेटेस्ट जजमेंट है कि 16 मई 2022 को इसकी जजमेंट आई थी। आई जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। ललित कुमार जैन के केस में कोर्ट ने कह दिया कि आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट हमारे कुछ लंदन एडवोकेट्स थे, ये देखिए, इसका मैं बताता हूँ इसका प्रोसीजर क्या होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। द मोमेंट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाती है, जो क्या कहते हैं, अगर सपोज कर लो सेक्शन 95 के अंदर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी, तो डेटर हैज नथिंग टू से लाइक दैट। जब डेटर कुछ कहने की नहीं होती तो यही पॉइंट को चैलेंज करा गया। और ये कारक देखिए, मोराटोरियम स्टार्ट्स ऑन फाइलिंग अगेंस्ट डेटर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू द डेटर। इट वायलेट्स आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बेसिकली उनके कहने का मतलब यह था कि मेरे को कल्प्रिट बना दिया गया, मेरे को गुनाहगार बना दिया गया, आई बीन मेड गुनाहगार विदाउट हियरिंग मी, विदाउट लिसनिंग टू मी कि वेदर आई एम ए कल्प्रिट और नॉट। Because in this case London advocates vehemently pleaded before the Supreme Court that all this thing violates जो हमारा एक बेसिक राइट है to be heard before treating us as a culprit, वो इसके अंदर वायलेट्स हो रहा है। अब हुआ इसके बाद क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं
उनको सॉरी ये गुरमीत सोधी के अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन थी उसको स्टे ग्रांट कर दिया कि ये अगर किसी बैंकर ने इस तरह से एप्लीकेशन आपके अगेंस्ट फाइल करी है तो आप वो यू कांट प्रोसीड विद दिस एप्लीकेशन अगेंस्ट यू टिल वी टेक ए फाइनल डिसीजन। लेकिन इसके साथ एक राइडर लगा दिया गया, राइडर ये लगाया गया इसके साथ कि आप अगर ऐसा करोगे तो वो जो डेटर है उसके जितने भी एसेट्स हैं ना तो वो उनको अलेनिएट करेगा, ना इनको इनकम्बर करेगा और ना ही इनको डिस्पोज ऑफ करेगा। मीनिंग देयर बाय अब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अपने आप को कैसे इसके अंदर लेके आए, हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अपने आप को इस तरह से इसके अंदर लेके आ सकते हैं कि अगर हमारे किसी क्लाइंट के लिए किसी बैंकर ने सेक्शन 95 की एप्लीकेशन फाइल करी है तो वी कैन आल्सो टैग आवर वी हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड टैग आवर केस विद इट, तो वी शैल डेफिनेटली गेट द केस। ओके एक जजमेंट ये एनक्लेयर की महिंद्रा कुमार जजोडिया वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी बिकॉज बेसिकली एक ये जजमेंट है और इसके साथ एक दूसरी जजमेंट हो रहा है, मैं दोनों को क्लब कर लेता हूँ। दैट पर्टिकुलर जजमेंट इज रोमा कृष्णन एंड अनदर्स। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली हेल्ड कर दिया। बेसिकली कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये पर्सनल कंट्रैक्ट के अगेंस्ट आप यानी कि जो ये प्रोविजंस हैं ये सिर्फ पर्सनल कंट्रैक्ट के अगेंस्ट है और इसके अलावा और किसी के अगेंस्ट नहीं है। जैसे सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अगेंस्ट मैंने आपको बताया, एफ एंड जी अभी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम उसको जो प्रोविजन उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो डिवाइड करते हैं कि डेटर ने जिस कंपनी के अगेंस्ट गारंटी दे रखी है, whether that company is in CRIP. If that company is in CRIP, then jurisdiction lies with the NCLT. If that company is not in the CRIP, then the jurisdiction lies with the DRT. It was written in the Act very clearly under Section 60. But the case went to NCLT, NCLAT, A also. In their wisdom, they thought of that ultimately that company will go on the CRIP, maybe like that. In that case, they simply went with the decision, even Honorable Supreme Court also, that in case of personal contest, all the applications shall be filed with the NCLT only. Meaning thereby that if anybody other than personal contract application shall be filed with the DRT, other than till then, it will be all filed with the NCLT. तो ये इन दोनों जजमेंट ने ये सिचुएशन को sort out kara, because if you effect of the situation was that if you are supposed to file the application with NCLT and you filed with the DRT because of the conception that no CRIP proceedings are against the debtor, the corporate debtor, so your application will be null and void. But now this matter has been decided. It got decided hardly a month and a half month ago only. No, this is there. These are the judgments. In fact, when I thought of that, I am part of your Punjab team. तो मैंने सोचा कोई पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट ढूंढने की मैंने कोशिश करी, तो I come across only one this particular judgment, Vijay Kumar Gai versus Pritapal Singh. In this case, what happened? Ki one lender has given a money to the borrower, whereby at a particular interest, he says that I have received a particular interest because in our IBC, the time value of money is very important. And he says that I have shown it in my return of income also. But when the documents were given to him, nothing was shown to there. And ultimately, the lower court dismissed that particular case. But High Court said, came out with some other thing and said, no, they referred back the matter to the lower courts to look all these documents again. And, basically this particular, although it is related to the Negotiable Instrument Act, but it has a very big relevance in the IBC also, because it has clarified what all the debts and any legal action proceedings meaning there, and that has clarified. But I don't find it very lucrative or something very reasonable to understand. But my only purpose of bringing it was there, since most of you be working at Punjab and Haryana High Court. That is why I thought of bringing some session. Okay. Now let's come to the practical question instead of going to the theory, for which we have a time or not. But let's go for the practical question. As an advocate, if you now you have a little bit understood that you can file application 94 by the debtor, 95 by the creditor. What are the prerequisite understanding which you should have before filing an application?
prerequisite is that you need to check as an advocate. You have to see whether 3-year limitation has expired or not. You have to see with the Naval's eye whether document evidence of guarantee is legible in form or not. Or third point, you have to check that whether personal guarantor is a corporate guarantor of CD or not. There is some procedural aspect of issue of a demand note, whether you have issued that or not. And at the same time, you should appoint your RP, because option has been given to you to appoint an RP of your known person, so that he can later on help you also in all these things, and get the form of application signed from him also, which is Form C. One of my friends did not sign the Form C, and ultimately court did not appoint him as the RP, and the whole process of appointment by the creditor, by the financial creditor, State Bank of India, went into vain. If no CRIP, can proceeding under personal control series can be started? I have already answered yes, because of Section 2E and Honorable Supreme Court judgment. If proceedings are going on at DRT, can petition against him be filed in NCLT where it shall be adjudicated? Meaning देयर है कि जो हमने आपसे पहले 2-3 एक्ट्स बताए थे, उनमें अगर एक इंडिविजुअल के केस में प्रोसीडिंग चल रही है, तो what will be the fate of that particular proceeding? Say that proceeding was done by the creditor, and what is the fate of this thing? Yes, it can be filed with the NCLT. Because as per the Supreme Court judgment, which I've shared with you, and ultimately the proceeding which is going on at DRT, that will be get transferred to the NCLT. There's a situation is also possible that a person is a director in 5-6 companies, and 5-6 companies are geographically located at different places, say in Delhi, Mumbai, Calcutta, Madras, or something like that. Then what will be his jurisdiction? Where application against under Section 95 shall be filed against him? There has been no decision by any of the court parents, but in my wisdom, principal bench shall decide. It has happened in earlier TRIP cases also, because many times different companies are listing at different addresses. In this case also, principal bench Delhi shall decide, or where the debt is higher or closer to the debtor address, or judicial authority shall decide or clue from the video conference. Meaning thereby, the principal bench in Delhi, which is a supreme bench of all the NCLT, will decide, and that principal bench is decide करेगा कि उसका maximum debt कहाँ पे है और वो debtor कहाँ पे resident कर रहा है. Say if if it is a money case, then debtor will be resident in Mumbai, so case will be handled by the Mumbai NCLT. And if somebody is from Delhi debtor, then case will be handled by the Delhi NCLT. If many this is also quite possible that different banks may file different applications against their debt due in that particular NCLT. Now, in that case, what will happen? Nothing happened in no decision is there. In fact, this thing happened with me in TRIP also, that I was appointed as RP in MR's case, whereby hundreds of applications under Section 9 was filed against that particular thing. But court took the decision that the application which is filed first, his proposed RP will be appointed as RP of the RP in the TRIP proceeding. I think similarly will be held therein also. Okay, first question I've already answered. Second question is if it generally happen, practically generally happen, that banks do take guarantee from all the directors, maybe husband, wife, whether wife is working or not, but they do take guarantee. Can one RP be appointed for both the personal guarantor? Earlier there was a confusion just for the sake of maintaining independence, but now there's no confusion. You can appoint him as one RP can be appointed for all the directors, and courts do separate also. In fact, it is convenient and cost effective also. Okay. Another is that we, the way you people have LLP or partnership firms. In IP profession, we have IPE, that is called Insolvency Professional Entity.
And insolvency professional entity can be a partnership firm or LLP or a private limited company also. So in this case, if a partner director from an IPE is RP of CD, can he be appointed as RP of personal guarantor? Answer is big no. Because regulation 3, explanation 3 to the regulation 3 specifically prohibits it. The other question is, if a partner director from an IP is RP of CD, can the other partner director be appointed as RP of the personal guarantor? Meaning thereby that it happens that if in a partnership firm or in an IP, one person is there, he will definitely firstly he should be get appointed, but when he can't be appointed, he will definitely say, let my other partner be appointed. Can anybody from the audience reply that whether he can be appointed or not? सर विकास जी थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो ना, तो जरा पूछते हैं. If you want, I can unmute everyone. Allow everyone to be unmuted. Yeah. Please. ये एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है and debatable है, तो let my learned friends answer it. I repeat question again. एक IPE के अंदर एक डायरेक्टर उस पर्टिकुलर CD का RP है, तो अब क्या कहते हैं, कैन ही मेक हिज अदर पार्टनर्स और डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड एज RP ऑफ पर्सनल guarantors? पर्सनल guarantor मीन डायरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. क्योंकि ये तो डिजायर होगी ना कि जितनी फीस मिले, जितने केसेस की, वो हमारे पास ही आए. Mukesh Jain says interested party cannot be appointed. मुकेश जैन जी तो मेरे पार्टनर है ना, इन्होंने तो बता दी बात. मुकेश जी चलिए मैं थोड़ा सा आपको करूंगा. No, my difficulty is I'm not finding for the unmute part. You just do that, I will do that. You continue. I'm just trying to unmute everyone. चलिए थोड़ा सा टाइम देते हैं सोचने का. चलिए टाइम थोड़ा सा कम है. आई जस्ट मूव फॉरवर्ड. मुकेश जी आप उसको पॉइंट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं. बिकॉज देखिए, अगर आपको प्रोहिबिशन लानी है किसी भी काम के लिए, तो प्रोहिबिशन आपको स्ट्रिक्टली लानी पड़ेगी एज पर लॉ. जैसे कि इन्होंने ऊपर ला दी कि अगर आप CD के RP हो तो आप उसके क्या कहते हैं पर्सनल गारंटर के RP नहीं बन सकते. इन दिस केस बिकॉज इस तरह की कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं है, सिर्फ एक रेगुलेशन 4 के अंदर एक्सक्लूजन है विच सेज दैट अपॉइंटमेंट आप सिर्फ उस बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते जो एक लेजिस्लेशन प्रोसेस की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या उसके साथ उसका कोई इंटरेस्ट हो. मीनिंग देयर बाय, अगर उसका कोई PRA के साथ इंटरेस्ट हो या RA के साथ इंटरेस्ट हो, तब आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन अपॉइंट. देखिए ये एक मेरा ओपिनियन है. आई कैन बी रॉन्ग आल्सो. अल्टीमेटली इट हैज टू बी एडजुडिकेटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और ओनली देन थिंग्स विल बी क्लियर. This is there. Limitation applicability from the date of execution of papers or from the date of revocation of guarantee. सर इसमें तो आप आंसर दिलवाई दो विकास जी मेरे को. ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. अब आपने सबको अलाउ कर दिया, एक एक करके जो मर्जी अपने आप को अनम्यूट कर ले जो चाहे आंसर देने के लिए. So anybody who wants to unmute himself, what he can do is that he can unmute himself by pressing the click button. Meanwhile, I will also just check it out on the YouTube. Because limitation, जैसा कि आप you all are aware of it. It's a very big thing in all the recovery laws. चलिए सर मैं इसको आंसर देता हूँ. टाइम इज क्लिकिंग फास्ट. तो वैसे भी अरे ये तो 1 घंटा हो गया जी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मेरा. 17 स्लाइड्स हुई हैं. आई हैव मोर देन 60 स्लाइड्स. So let me move a little bit faster.
And So what we can do is, Manoj, if you find it well, rather than rushing through, we can have a second session tomorrow also. No, sir, I'm very busy. Not tomorrow. We can keep it in next coming week. Yeah, that's what I'm saying. Rather than rushing through, it's always better to, like in law, they say that justice hurried is justice buried. तो चलिए मेरा already session planned है Saturday का और I need to. So we can go ahead as per your convenience. 9 p.m. is such a time that everybody can stay connected. Yeah. Like we normally say कि भाई we can always say that picture तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. सर आज आपने लोगों को मैच देख रहे थे सब लोग बैठ के आपने उठा लिया इंडिया इंग्लैंड का मैच देख रहे थे और वो बेचारे सब मन से कह रहे होंगे कि भैया देखो हमारे को विकास जी ने उठा दिया. नहीं वो there are only two ways of things. Can the time is like a gas, it occupies the space and vessel wherever you want to go. नहीं सर इसमें मैं थोड़ा सा और मसाला ऐड कर देता हूँ. अभी इंडिया की इनिंग स्टार्ट नहीं हुई है या होने वाली होगी तो इंडिया की इनिंग देखने में ज्यादा मजा आता है. तो मैं अपना ऑलरेडी 1 घंटा टाइम हो गया और थोड़ा सा टाइम लेके 10-15 मिनट लेके आई फिनिश इट ऑफ एंड यू कैन एंजॉय मैच आल्सो अलोंग विद माय प्रेजेंटेशन प्लीज. चलिए under Contract Act 1872 it is a civil code being DRT. Where to file the application ये मैंने already बात में सारा clear कर दिया. Can PG recover amount from CD later on of the payment made to the creditor? Meaning thereby कि अगर suppose कर लो किसी director ने कंपनी की रिकवरी के अगेंस्ट पैसे पे कर दिए तो जो जिस नए बंदे ने कंपनी परचेज करी जो नया रेजिडेंट एप्लीकेंट है तो क्या जो डायरेक्टर है उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये एक बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन इस टेढ़े क्वेश्चन का हमारे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया है. पहले हम थोड़ा सा ना इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 145 है वो ये कहता है as per contract act under section 145 there is an implied promise to indemnify surety by the borrower for all rightful sums paid under the contract of guarantee. But section 31 of IBC says approval of registration plan is absolute and binding on all including personal guarantor of the corporate debtors. In that case sums paid shall not be rightful and PG shall not be entitled to indemnify the CD. अब देखिए कितना एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैंने आपको शुरू में फोटोज दिखाई थी जो आपके माइंड के अंदर अभी भी ताजी होंगी जिन्होंने 10-20 हजार करोड़ रुपए का देनदारी है. अगर उनके केस में रजिस्ट्रेशन प्लान बन गया 31 का तो वो पैसे देने के लिए बिल्कुल लायबल नहीं है. और अगर रजिस्ट्रेशन प्लान नहीं बना तो उनके केस अगर बैंकर्स ने केस फाइल कर दिया तो दे आर लायबल टू पे द मनी. दिस इज अ वेरी very big. तो इस तरह से वो कहते हैं ना हम एडवोकेट या हम अपने भाइयों के साथ कैसे अपने क्लाइंट्स के अफेयर्स को प्लान कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी बिग प्लानिंग either from the recovery angle or from the debtor angle, from the payment angle. This is a practical question again for my advocate colleagues. Application filed with the registry say on T time, then came out for hearing for lotting case as on say T plus 30 time. First notice issued by the NCLT say T plus 60 time. When interim moratorium under section 96 shall start. सर इसका आंसर मिलता है एनसीडी के रूल्स के अंदर जो ये कहता है when the came out for इसके लिए जब केस को अलॉट करा जाएगा उस समय ये इंटरम मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा. ओके यू बी सरप्राइज टू नो कैन यू टेल मी कैन एनीबॉडी शेयर विद मी कि जैसे हमारे आईबीसी में क्रिप्ट के अंदर 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स. ये इंडिविजुअल्स के केस में कितना अमाउंट है? कैन एनीबॉडी हैव अ वाइल्ड गेस और टेल मी विद दिस नॉलेज? 1000 सर. हाँ जी 1000 रुपीज. सर आप सीए हो ना तो आपको पता है ये बात. बिल्कुल ठीक है आपने. इसके अंदर सिर्फ 1000 रुपए का ही लिमिट है अंडर सेक्शन 78. ओके माय अनदर क्वेश्चन कम आउट टू बी देयर. इज co-borrower also a guarantor? I just give an example. Sorry sir. I just give with an example. Say as SBI has given 100 crore rupees of loan to A Limited. When they give the loan to the A Limited, they
instead of taking, they have taken other directors as co-borrower also, and whereby they said that liability will be fastened on them either individually or no, that technically we call it as either individually or balance of the amount which others are paid. So, they are the co-borrowers. Co-borrowers mean that they have all the company and all both the directors, all the three persons have jointly borrowed the money from the bank, and they are the co-borrowers. In that case, no doubt money is being used by the company. Can in that case jointly and severely liable? They have, they have that sort of agreement. In that case, can these co-borrower be treated as a guarantor? I think I've been able to explain my question very properly. Can the co-borrowers be treated as a guarantor or not? Because they have a joint and severe liability. Yes. चलिए मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट आंसर है, इनफैक्ट मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। इनफैक्ट मैंने भी जब अपनी एक रिपोर्ट दी उसके अंदर गलती कर दी, और जब मैंने गलती कर दी तो उस समय मेरे को किसी ने इस तरह से पढ़ाया नहीं था, तो इस करके मैंने गलती कर दी। अगर मेरे को किसी ने पढ़ाया होता तो मैं गलती नहीं करता, और जो पर्टिकुलर लेंडर है उसने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया कि भैया ये आपने गलत रिपोर्ट दे दी। इस केस में मैंने रिपोर्ट ये दी थी he is a guarantor also, and proceedings can be started against them also, by confirming Section 95 application as filed by the borrower. But when it deeply went into therein, so Section 126 है Contract Act, which says, which prohibits this thing. Why it prohibits this thing? It says, it's very, very material. Section 126 defines contract of guarantee, surety, principal, debtor, and creditor. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of a default. Meaning thereby, in the case of co-borrower, when they have become co-borrower, their liability is joint and fair. So they can't stand guarantee with you. They can't stand guarantee for himself. And the guarantee has to be only against a third person. Meaning thereby that if company has borrowed and these two persons are given a guarantee for the repayment of loan, then they stood guarantee for this. And now you see the implication of the whole such a small thing. Since at present this section has been, this particular IBC has been notified only for personal guarantors, the corporate debtor. The moment a person is not a guarantor, he goes out of it. Then no application can be filed against him, meaning thereby that in the case of co-borrowers, this application under Section 95 can't be filed by the creditor. Okay, another thing is that in the case of CRIP, suspended debtors or SOI debtors have no power to replace an RP. Do they have in the case of personal guarantee, do the debtor have a power to replace RP? Yes. Section 98 gives power to debtor to replace RP. In my opinion, it is very dangerous power with PG because his relationships with RP are expected to be sweet and sour, like RP versus debtor in CRIP. In fact, Section 27 of COC with 2/3 voting right can only replace. अब देखिए ये एक सेक्शन जो है 98 वो ये कहता है कि जिसके अगेंस्ट आप एडजुडिकेट करो हुए आप उसको रिप्लेस यानी कि आप उसको रिमूव कर सकते हो। मीनिंग देयर बाय कि जो भी कल्प्रिट है उसको कल को ये पावर दे दी जाए कि वो जज को रिमूव कर सकता है। उसको जज पसंद नहीं आया तो कहते हैं जज को रिमूव कर दो। तो ये आई थिंक दिस इज आवर लॉ मेकर most probably overlook this particular aspect. This is a very, very dangerous power with the debtor, and it is being abused. In fact, it has been abused against me also. Let's see how adjudicating authority take cognizance of all this thing. Sir, 10:10 हो गए हैं. Should I stop my presentation here and move to the next part, or because everybody has, but we can do it in the second part. Yeah, we can postpone it to second or third part, how much time, because अगर मैं स्पीड से करता तो शायद फिर समझ नहीं आती सब लोगों को, हर किसी के लिए नया लॉ है. So that is why I went slowly and with the objective of making the my learned friends to learn from whatever later knowledge I have with me.
तभी आपके नाम की प्रति इसी की तरह सबको आनंद भी आया सेशन सुनने में. I'm really honored. I'm really honored. विकास जी, आप विकास के पद पे और मैं भी आपके साथ मिलकर विकास के पद पे चलूंगा. I'm really honored. तो इस फ्रेंड्स जैसा अभी तय हुआ, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली दे से दैट it is important to come on a common page and think on a like mind process, especially once you are taking a journey of legal sharing and thought processes where we can empower. As the Prime Minister and the other comment also says that legal empowerment and the empowerment of enrichment to education is the biggest source. And these testing times of COVID has made us learn that they all say that I is illness and we is wellness. So once we meet together, move together, we always improve better. And they say that each one plant one and each one teach one. But Mr. Manoj has not only taught one, but he has taught in thousands, and we improve and believe that his journey of legal sharing and understanding, making them simplified, would continue. आशा करते हैं ऐसे ही हम लोग आपस में मिलते रहेंगे, नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे. जिनको कभी लगता है कि कोई अच्छा टॉपिक लिया जाए, अच्छा स्पीकर लिया जाए, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है. जिन्होंने ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसी बात पे हम शब्बा खैर करते हैं, गुड नाइट करते हैं. I hope that everyone is stay safe and blessed. Keep on improving your knowledge, and that's what they say, that once the knowledge is there, the nation is also safe and blessed. Thank you, everyone. Stay safe, stay blessed. Namaskar. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. We shall continue coming week, next week, please.